Hello everyone, welcome to Manoeuvre, and today is a very important day, 11 November, which is observed as the National Education Day. So on this special day we are celebrating the National Education Day, and here I am giving the important information related to this important day, National Education Day, why we celebrate, and Maulana Abdul Kalam Azad birth anniversary celebrated as a National Education Day. Okay guys, so what is his contribution in education field, because he is the first education minister of India. And as well as also we will see about the new education policy, which is important for your knowledge purpose as well as exam point of view. So this video will be very helpful for you. So just watch the complete video, and for more important and informative video you can subscribe our channel. So let's see the important information related to the National Education Day. So first we will start from the basic introduction why we celebrate. So National Education Day celebrated as a honor of the Maulana Abdul Kalam Azad. So who was he? He was the first independent education minister, and he was born on 11 November 1888. So that's why it's observed on 11 November as a National Education Day. And he served as the 15 August 1947 until 2nd Feb 1958 as an education minister, guys. So these are the some important facts related to the Maulana Abdul Kalam Azad, and the National Education Day of India celebrated on 11 November, which is important for your knowledge as well as exam point of view, where the 1 marks question will come from the important day section, guys. Okay, now see the some other information. The Ministry of Human Resource Development announced the 11th September 2008. The ministry has decided to commemorate the birth of his great son of the India by recalling the contribution to the case of the education in India. November 11 every year from 2008 onward will be celebrated the National Education Day, with declaring it as holiday. Okay, so this is the official announcement by the India government to observe the 11 November as a National Education Day. And how we will celebrate this important day? In way of to conducting the seminar, workshop, essay writing and elocution competitions and rallies. So these all are the different way to celebrate the National Education Day in different type of the institutions, especially on school, college and university level. Okay guys, next important thing, we will try to understand the more about the Maulana Abdul Kalam Azad. Who was he? So Maulana Abdul Kalam was a scholar, an activist and a leader of the Congress party, and he served as the education minister for the 11 year, and as a freedom fighter Azad was the leader of the Khilafat movement and helped organization the non-cooperation movement in 1919. So this is also important for the history point of view. Azad was the follower of the Gandhian philosophy. So जो गांधी जी की विचारधारा थी, जो उनकी philosophy थी, he is also follower of the Gandhi ji. And some important fact related to the Maulana Azad, he also served as the president of the Congress party in 1923 and from 1940 to 45. So this is also important as a history point of view. And the last one, which is important for books and writer point of view, guys. So यहाँ पे हम दोनों चीजें कवर करें. एक तो आपको information दे रहे on this special day, as well as exams के लिए क्या important हो सकता है, वो fact भी हमने यहाँ पे include किया है. So video काफी informative है and helpful है. यहाँ से बहुत सारे points आपके clear हो सकते हैं. So books and writer point of view से sometime exams में question frame होते हैं. तो remember on this special day, India Win Freedom and Guber Khatir. So these are the two books which is written by the Maulana Abdul Kalam Azad. Books and writer point of view से ये information important है. Now come to the next point, Maulana Abdul Kalam contribution toward the education in India. This is also very important. You should to know about this important personality. So he one of the founder member of the Jamia Millia Islamia, which is a very well known university at Aligarh in Uttar Pradesh. He helped the shifting the campus of university from the Aligarh to New Delhi 1934. So I hope you know about the Jamia Millia Islamia. Last to last year यहाँ पे काफी violence भी हुआ था, जो कि because of that it was in a news. And he is a believer in the power of quality education. Maulana Abdul Kalam Azad helped establish the University Grant Commission (UGC) on December 28, 1953. So these are the some important institutional reform by the Maulana Abdul Kalam Azad in education field. So as education minister, he is accredited with the establish of the Indian Institute of Technology (IIT) and some other academy, for example ISC, Indian Institute of Science, Bangalore School of Architecture and Planning, Sangeet Natak Akademi 1953. Important fact, remember this is the important, when the Sangeet Natak Akademi was established 1953. Important information for your static GK point of view. Sahitya Akademi 1954, इससे relate करके question frame होते हैं exams में. Okay, Lalit Kala Akademi 1954 to promote the education and culture in the country. Okay, on the September 11, 2008, Ministry of Human Resource Development MHRD decided to celebrate the November 11 as a National Education Day annually, and MHRD also given the Maulana Abdul Kalam Azad National Fellowship in the
form of the financial assistance to the student from the minority community to pursue the MPhil and PhD. I hope you people know about this scholarship program which is started by the India government, Maulana Abdul Kalam Azad, the scholarship for the minority community. Okay. So these are some important information related to the Maulana Abdul Kalam Azad and his contribution in the education field. Now come to the important fact about the new education policy, which is very important for you to know about the new education policy, which was announced by the India government in 2020. जो कोरोना पीरियड से पहले इसका अनाउंसमेंट हुआ था, बट अभी implementation बाकी है. And here we will see the some important fact related to the new education policy, guys. So it shared the idea to revamp the education teaching assessment system in school and colleges. Okay, so these all are the three important ideas about the new education policy, and previously it was implemented in 1968, 1986, 92. Modification occurred in the policy of 1986 and 2020, which was announced before this pandemic. Okay, let's discuss 6 major category of the where the changes happened. इस new education policy का अगर मोटा मोटी अगर मैं आपको बताऊं तो क्या changes हुआ है. So here you can see school education, लैंग्वेज, हायर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन. बेसिकली ये 6 पॉइंट पे हम फोकस करेंगे एंड क्या क्या चेंजेस हैं एंड व्हाट द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट, एवरीथिंग वी विल सी. ओके, सो फर्स्ट स्कूल सिस्टम. सो स्कूल सिस्टम में क्या चेंजेस किया गया? 10+2 सिस्टम विल बी डिवाइडेड इनटू द 5+3+3+4 फॉर्मेट. सो इसको डिटेल्स में ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने का. तो फर्स्ट विल बी द फाउंडेशन स्टेज. ओके, तो फाउंडेशन स्टेज विल बी द फॉर द 5 ईयर, टोटल 3 इयर्स फॉर द प्री प्राइमरी एंड स्कूल एंड 2 इयर्स फॉर द क्लास 1 एंड क्लास 2. इसको मैं और डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा. फर्स्ट सी दीज ऑल द हाइलाइटर्स. प्री प्राइमरी स्टेज 3 इयर्स टोटल, class 3 to 5, and middle will be 3 years, class 6 to 8, and secondary will be for 4 year from class 9 to 12. And new education policy expanded the age group. Mandatory schooling previously it was 6 to 14 years, but it will be now 3 to 18 years, guys. So what is the new things here? So new things here is how the government is planning to transform the curricular and pedagogical structure. So our existing academic structure, if we will see, so it is a 10 year from 6 to 16. It means from standard 1 to 10, and plus 2, it means 12th standard, which is 16 to 18 years. Okay, so what will be our new academic structure? So let me hide myself so you can see all the data. Okay, so new pedagogical and circular structure of the school education will be 5+3+3+4 and 3 years in the Anganwadi preschool and 12 year in the schooling. So this is a very important part, guys. Anganwadi preschool. So if we will compare the government and private schools, so we know in the private school का जो structure रहा है पहले से ही pre primary section, primary section, and then standard 1, 2, 3 start होता है. But such type of the structure is not in the government school. So now the government is planning to make this type of the structure in the government school as a Anganwadi, which will be the similar to the pre primary section as a English medium convent school type of the concept. Okay, and here you can see first one is the foundational stage, which will be the multi-level play activities based learning, and second will be the which will be for the 3 years play, discovery and activity based and interactive classroom learning, and middle stage will be for the 3 years experimental learning in the science, mathematics, art, social science and humanity, and last one will be the secondary stage, which will be the multidisciplinary study, greater critical thinking, flexibility and student choice of the subject. So structure of the new education policy which is introduced by the government will be according to that. In the picture very easily you can understand, guys. Okay, so here is the one challenge for the government to implement the Anganwadi system. It means like जो play group होता है convent school में, play group और pre primary section, so उससे related जो different type की activities होगी, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट के टीचर होंगे दे नीड ए स्पेशल ट्रेनिंग. सो आंगनवाड़ी वर्कर आर नॉट इक्विप्ड और ट्रेन टू टीच. सो उनके लिए जो गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया विच इज ECC, दैट विल बी द 6 month सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन द ECC, एंड दोज विद द लोअर एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल बी गिवन द 1 year डिप्लोमा प्रोग्राम टू कवरिंग द अर्ली लिटरेसी, न्यूमरेसी एंड द रेलिवेंट एस्पेक्ट ऑफ द ECC. सो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द स्पेशल ट्रेनिंग टू द टीचर फॉर आंगनवाड़ी एंड बालवाड़ी. ओके, सो जो स्पेशल एक्टिविटीज होगी स्टूडेंट्स के लिए. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज अ बोर्ड सिस्टम. सो ग्रेड 10 and 11 विल बी द कंटिन्यू. लेट मी शो द कैमरा.
Okay, now see the board related information. So grade 10 and 12 will be continue and focus on the testing concept and knowledge applications and second chance at board to improve their score. So यहाँ पे एक new things का implement किया गया है. अगर से आप score increase करना चाहते हो तो they will give the chance and subject selections on the level base. It means different level के subjects का implementation होगा. It means for example अगर mathematics का कोई subject है तो as per the student जो एक medium level का है एक high level का है तो उस लेवल के सब्जेक्ट का सेग्रीगेशन होगा एंड स्टूडेंट कैन चूज अकॉर्डिंग टू देयर लेवल. ओके, नो हार्ड सेपरेशन. करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर एंड आर्ट, ह्यूमैनिटी, साइंस एंड वोकेशनल और एकेडमिक जो स्ट्रीम्स है डिफरेंट स्ट्रीम जो कि अभी के लिए कि स्टूडेंट 10th के बाद ही अपना स्ट्रैक्टली स्ट्रीम फाइंड कर लेता है कि अगर बहुत अच्छा स्कोर है तो साइंस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग वो अपना कंटिन्यू स्टडी करता है. आर्ट और कॉमर्स के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करता है एज पर हिज कैपेबिलिटी. बट हियर इन अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सेपरेटेशन है जो 10th स्टैंडर्ड से डिफाइन हो जाता था वो नहीं होगा. कभी भी आप अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट आप चेंज कर सकते हो. ओके, एंड करिकुलर एंड स्पोर्ट्स सब्जेक्ट्स ट्रीटेड एट द सेम लेवल. अभी तक के लिए अगर आपने स्टडी किया होगा तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था स्पोर्ट्स सब्जेक्ट जो कि एक सप्लीमेंट की तरह होता, बट इट इज नॉट काउंटेड एज अ मेन सब्जेक्ट. बट नाउ इट विल बी काउंटेड एज अ मैथमेटिक्स, साइंस जो अदर सब्जेक्ट होते हैं उनके लेवल में इसको इंपॉर्टेंस होगा. रिव्यू ऑफ द पीयर्स एंड टीचर्स. पीयर्स इट मीन जो आपके लेवल के आपके क्लास में स्टूडेंट्स हैं and teacher also both will be review your marks, your capability and skill analysis, critical thinking and concept clarity. ये सब सारे पार्ट पे वर्क होगा in a new education policy. And next important part and aim of the government to cross the enrollment ratio goal for 2035. So secondary education के लिए स्टूडेंट जाते थे, now government is planning its goal to 100%. अभी जो करंट है इट्स सेकेंडरी के लिए जो टोटल स्टूडेंट होते थे उनका सिर्फ 56.5% ही 11th 12th के लिए इनरोल करते थे एंड हायर एजुकेशन के लिए जो स्टूडेंट होते हैं वो 50% अभी गवर्नमेंट का टारगेट है. एंड प्रीवियसली जो अभी के लिए अगर आप स्कूलिंग से देखो तो ओनली द 26.3% पीपल आर इनरोल फॉर द हायर एजुकेशन. बट नाउ द गवर्नमेंट इज प्लानिंग एंड इट्स गोल इज 2035 की एटलीस्ट 50% पीपल शुड बी इनरोल फॉर द हायर एजुकेशन. सो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट का एम है. नाउ कम टू द लैंग्वेज पार्ट विच इज इंपॉर्टेंट. जो मैंने 6 पार्ट आपको डिफाइन किए थे, जो 6 मेजर पार्ट है उस पर हम डिस्कस करेंगे. सो एनईपी पुट द फोकस ऑन द मदर टंग एज द मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन. सो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये रिकमेंड करती है कि जो एजुकेशन होगा एलिमेंट्री एजुकेशन इट शुड बी इन द मदर टंग. सो व्हेनेवर द पॉसिबल ऑफ द मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन अंटिल द लिस्ट ग्रेड 5 बट प्रेफरेबली टिल ग्रेड 8 by beyond will be the home language. So mother tongues को ये recommend करता है but not force, compulsory नहीं है. Mother tongue, local language or regional language, therefore the home of the local language shall continue be taught as a language wherever the possible. This will be followed by the both the public and the private schools. So mother tongue is recommended by this new education policy and this thought is based on the research show that the children pick up the easily and very quickly in the multilingualism as a great cognitive benefit and the 3 language formula at least 2 language should be the Indian. It means as per the state, एक state का language हो गया, एक हिंदी हो गया, at least 2 Indian language होना चाहिए. The new education policy only recommend the mother tongue. So यहाँ पे compulsory नहीं है, not make it compulsory. Okay, so इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. क्रिटिसिज्म ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन इन मदर टंग, उसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है. हियर यू कैन सी अनइक्वल लर्निंग इन द प्राइवेट वर्सेस पब्लिक स्कूल. सो गाइस पब्लिक स्कूल जो होते हैं अगर से यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाता है एंड प्राइवेट स्कूल से अगर कंपेयर करो तो मोस्ट ऑफ द प्राइवेट एंड कॉन्वेंट स्कूल इज द इंग्लिश मीडियम. ओके, तो वहां पे कंपल्सरी नहीं है, वहां पे स्टूडेंट बेसिक एजुकेशन से इंग्लिश मीडियम से ग्रो करेगा, इंग्लिश मीडियम से ग्रो करेगा. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर हिम टू गेट द हायर एजुकेशन इन द इंग्लिश मीडियम एंड टू गेट द जॉब इजिली इन द फ्यूचर. एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द स्टेट वर्सेज स्टेट. अगर से कोई पर्सन गुजरात में स्टडी कर रहा है बट आफ्टर द सम टाइम अगर से उसने बेसिक एजुकेशन गुजराती मीडियम्स में किया है बट आफ्टर ट्रांसफर अगर से उसका पेरेंट कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उनका ट्रांसफर हो जाता है किसी दूसरे स्टेट में, फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश, एंड वहां पे फिर से वो 6 to 8 स्टैंडर्ड उसको स्टडी करना हुआ वहां के लोकल लैंग्वेज में. सो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर such type of the student. And the next one is the English is the dominated language
ऑफ इंटरनेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो अगर से कोई मदर टंग में स्टडी करता है एंड इन फ्यूचर अगर आप देखो तो इंटरनेट पे अगर आपको स्टडी करना है, ऑनलाइन स्टडी करना है, इंटरनेशनल लेवल की कोई एजुकेशन लेनी है तो वहां पे इंग्लिश इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट अबाउट द चिल्ड्रन ऑफ द पीपल इन ट्रांसफरिंग द जॉब, जो मैंने अभी आपको बताया किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ट्रांसफर होता है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिज और हर चिल्ड्रन जो कि किसी दूसरे स्टेट में वहां के मदर टंग में एजुकेशन लिए एंड इंस्टेंटली ट्रांसफर हुआ, सो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम to again study the different state language. Okay, so these all are the some limitation and criticism of the new education policy. Now come to the next part, college admission and entrance exam. So see here what the new education policy say about the college admission and entrance exam. So common entrance exam for the admission, the National Testing Agency NTA will conduct the CEE across the country, a common aptitude test twice in a year, subject science, humanity, language, art, vocational subject. Okay, so one centralized aptitude test will be conducted by the NTA, Higher Education Commission of India, overreaching the umbrella body excluding the medical and legal education. Okay, and large multidisciplinary university and colleges and target up to 2040 and at least one university in every district. So this is a very great achievement. अगर इंडिया गवर्नमेंट ने इतना कर लिया तो that will be very great achievement कि each district में एक यूनिवर्सिटी होगा. National Research Foundation target 4-year course. This is a very important reform guys. So 1 year, 2 year, 3 year, 4 year. For example, अगर किसी कोर्स के लिए आपने इनरोल किया BE के लिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, किसी में भी अगर आपने इनरोल किया है तो अगर आपने 1 ईयर करके आपने ड्रॉप आउट कर दिया तो यू विल गेट द सर्टिफिकेट. आपका पूरा वेस्ट नहीं होगा वो 1 ईयर. ओके, एंड अगर आपने 2 इयर्स करके आपने उसको ड्रॉप आउट कर दिया, एटलीस्ट यू विल गेट द एडवांस डिप्लोमा. एंड 3 इयर्स किया तो आपने बैचलर डिग्री एंड 4 इयर्स अगर आपने कंप्लीट किया तो बैचलर डिग्री विद द रिसर्च का आपको डिग्री मिलेगा. एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट फॉर द digitally storing the academic credit on from the different HEI so that this can be transferred and counted toward the final degree earned. So these all are the some new things which is implemented in the new education policy and technology in education. So this is the very important as per the current scenario. Use the technology in the teaching, learning and assessment, education planning, Digital India campaign, administration and management, and very important for here you can see Divyang friendly software. So this is the aim of the new education policy to implement it. And next part is the finance. The current public government, center and state expenditure on education India has been around the 4.43%, which is very less as compared with the western country and of GDP. So NEP target the 6% of GDP. So this is the target of new education policy to expend the 6% of total GDP for the education. But here is one criticism. The same target was set up in the 1968 and 1986 too. But अभी उस target को achieve नहीं किया गया. So hope so ये जो new education policy है जब इसका implementation होगा so ये target complete हो जाए. So India का education system एक right way में reform हो सकता है. Okay, so that's all important information on this special day, National Education Day guys. So I hope this information is helpful for you, your knowledge and your exams. So such type of the informative video, just subscribe the channel. And here is one my question: when we will observe the International Education Day? International Education Day observe on which day? You have to give this answer in the comment. So I want to see how many people will give the right answer guys. Okay, so if you have any other doubt and query and want to know the information based on any important topic, so you can write the topic name in the comment box. So definitely if it will be important, so I will give the information based on that topic. Okay guys, so thank you and Jai Hind.